Okay, good morning all. Let's continue. Um, First of all, I'll share my screen so that you can see the book. Okay, so we have finished with unit 1 in the classroom. So we'll continue with unit 2. Although we started with the introduction part of it. So the unit 2 is all about the networking and internet, right? Now we'll try to learn how networking is basically done and what are various terms and things that are related to internet. We'll learn those things in this chapter. Starting with how internet or network started, how internet started, we'll start with that part. So as we all know that uh, prior to internet, the communication that was happening, that was basically done with the help of television or radio waves, right? Communication in print media was started in 1440 by invention of the printing press, right? So then telephone services, these were also introduced in the 19th century, right? Then radio, TV also came up. So, but if you talk about internet and networking services, it started with the name ARPANET. ARPANET was the first network. Network means network basically is a group of computers connected to each other, right? Or ARPANET was the first network found where certain computers were connected to each other with the help of telephone lines, right? Or the purpose of this network was to establish communication between different departments of some organization, was basically the Defense Department of America, right? So, so this is the basic starting of ARPANET started in 1969, right? It was a digital packet switching network where the data is transmitted in form of small packets, small area, small. You can say the message is divided into smaller portions, छोटे-छोटे portions में divide करते थे और उनको digital form में transfer करते थे. So this was the first network, right? Now before this, प्लीज uh, रिपीट करना. ARPANET. I'll start from the beginning. See, in 1876, right? This public switch network telephone system was launched, right? In which you can say जो टेलीफोन होते थे घरों में वायर वाले वो जो सिस्टम था started in this particular year, started in 1876 77 so उसमें all different devices, your telephone devices, they were connected with each other through these wires, right, through cables. So this was the first set of network which was established. But although इसमें computers का use नहीं था, but एक छोटा network था जिसमें telephone wires के साथ telephone lines के through घरों में computer devices लगाए गए और उसको connect किया गया, right? Then in 1950s, military communication started working on telephone networks. So they started using that same technology. उन्होंने telephone networks को use करना शुरू किया और एक dedicated connections बनाया. Dedicated connections मतलब where both parties जो sender receiver हैं वो fix हों, dedicated, right? A sender is the one who sends the message and the receiver is the one who receives the message. तो ये dedicated connection बनाया गया दो parties के बीच. या और ये भी telephone networks के ऊपर established, right? So another form of, you can say, communication started working. But this was based on circuit switching, which was matlab, not so secure method, because telephone lines में जब हम data transmit करते हैं, nowadays it is transmitted in digital form, but in earlier times it was not digital, so there was a danger, right? There was a danger of leakage of data, right? So what happens is during the Second World War, the US Department, the Defense Department of USA, they started up with another system called as packet switching. पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं और उनको एक डेडिकेटेड पार्ट से ट्रांसफर किया जाता है, राइट?
So when it comes to dedicated system, then it is secure. Moreover, when your data is divided, it is divided into packets. They are given certain codes, right? You can say addresses, so that they can reach the destination. तो वो कोड की वजह से वो थोड़ा यूनिक हो जाता था. तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो बेटर था और सिक्योर था, राइट. सो later on that system keeps on improving, and it comes to 1969 when first network was established. उसका नाम था ARPANET. The full form is ARPANET is Advanced Research Project Agency Network, right? Fully digital, fully packet-based data transmission, right? But the thing was, it was only used by Defense Department. It was not the access was not given to the general public, so the normal people, right? The access सिर्फ military और research work के लिए होता था, non-commercial form था वो, right? और then जब ये डिफेंस डिपार्टमेंट ने बना लिया 1969 में, then later on later years बाकी कंट्रीज ने भी बनाना शुरू किया. Then even this ARPANET was expanded, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनको भी इस नेटवर्क में लिया गया, राइट. I'll tell you the beginning of it. ARPANET में शुरू में 4 कंप्यूटर्स होते थे और 2 लोकेशंस थी. One was California and second one was Utah. तो 2 लोकेशंस में कंप्यूटर्स को आपस में उन्होंने टेलीफोन वायर्स के साथ कनेक्ट किया, राइट. दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग और उनके ऑफिसेज बढ़ते गए, बट शुरू में सिर्फ डिफेंस डिपार्टमेंट में ही ये नेटवर्क बना था. Later on they allowed the universities and the education institutes also to join, right. Then similarly it keeps on growing also. It's not only in America, it started in other countries also, और world के बहुत सारे areas में ऐसे networks बनने शुरू हो गए, right. Then what happens in 1970, another technology came which was called as TCP/IP. TCP/IP जो आज भी हम यूज कर रहे हैं. Now, this is transmission control protocol and internet protocol. What is the use of this particular thing? ये IP, TCP और IP ये 2 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे रूल्स हैं जो डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, and they are common for all, right. So what happen is TCP is responsible for converting your data or message that you want to send into smaller parts, जिनको हम पैकेज बोलते हैं, and IP is responsible for transmitting those packages from one computer to another computer, right. और ये टेक्नोलॉजी आज, right. Then as I told, several smaller networks they came into existence. Then what happens in 1984, a large network was developed, right. तो यूएस का एक डिपार्टमेंट है NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन. उन्होंने रिसर्च पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए जितने भी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स बने थे उन सबको आपस में जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बना, राइट. उसको NSF नेट बोलते थे, राइट. तो दिस वाज अ फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा था, राइट. इट वाज अ सिंगल नेटवर्क, और उसमें फिर इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज को ऐड किया. दे स्टार्टेड using TCP/IP protocol. There the TCP/IP protocol was used. That means your communication was easy. One device can send message to another device using TCP/IP. So this was a kind of internet service that was formed. उसको इंटरनेट तो बाद में नाम दिया, but ये एक पहला सिस्टम था जो वर्ल्ड वाइड था, where all over world various computers they were connected with each other through a single network. All were connected. तो उसका फायदा क्या था, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी TCP/IP यूज करके मैसेज सेंड कर सकते थे, राइट. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट, राइट. दिस इज हाउ इंटरनेट स्टार्टेड. So internet is basically network of various network of networks बोलते थे आपको, okay. Then we know that there is no owner of internet. Internet का कोई owner नहीं है. No country is the owner. Nobody is basically controlling everything.
plus, but we have certain agencies which basically monitor the things, right? So इसमें एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, राइट? ये ऑपरेबिलिटी को मेंटेन करता है, मतलब हाउ द थिंग्स विल बी ऑपरेटेड, हाउ द थिंग्स विल हैपन आफ्टर दैट, दे कीप ऑन चेकिंग द थिंग्स, राइट? Then other various other organizations were also involved. They were also used. They were also giving services for better use of internet, right? आजकल तो वैसे भी इंटरनेट पे बहुत कुछ positive, negative, I mean, lot of material is there. So to track those things, so certain organizations are working so that जो unethical चीजें हैं उनको ब्लॉक किया जा सके, right? Then after this entire NSF net was formed, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सर्विसेज जो है वो कॉमन कर दी, right? So how this thing was done, so basically certain, earlier it was all government services, right? Later on private organizations were also given the access कि वो भी इंटरनेट की सर्विसेज को आगे फॉरवर्ड कर सके, राइट? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, such organizations are called as ISPs, internet service providers, right? So this structure of communication on network we have already covered in first chapter, that there's a sender who sends a message, there's a receiver who receives a message, right? And all the messages that are sent, they follow the channel. Fine. So this exchange of information takes place between one or two, more than one, or more than two senders and receivers also. Right? There can be more than one sender, there can be more than one receiver also. And it can be two-way process also. It's not necessary कि sender का काम सिर्फ मैसेज भेजना है, receiver का काम सिर्फ मैसेज रिसीव करना है, ऐसा नहीं है. Sometimes the receiver also sends feedback back to the sender, right? So this is how basically your internet started. Fine. Now we'll talk about computer networks, right? Now network and internet both are they're almost similar, but there's a bit difference of it. So network क्या है? Network is although internet is also a network, but network का मतलब है group of devices which are connected to each other, and either they are connected through some wireless media or some wired media. ठीक है? तो अगर हम एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं, that is also a network. When we are connecting multiple offices in one city, they are also a network. When we are connecting multiple offices in the entire country, that is also a network. And when we are connecting multiple devices located at different part of the countries, so that is also a network. So network का मतलब है devices को connect करना आपस में किसी ना किसी medium के through, either through wireless or wired form, plus location specific नहीं होगा, वो छोटा network भी हो सकता है, बड़ा network हो सकता है, right? Now this figure that we have seen, this is one way communication. One way मतलब जिसमें मैं बता रहा था feedback भी हो सकता है, here it is not mentioned, so that is one way. One way communication where only sender sends a message to the receiver, nothing else happens. The receiver कुछ भी response नहीं दे रहा, so that is one way kind of communication, right? So it can be two way also, right? This is another example of network where we have four devices, three computers, computer system A, computer system B, computer system C, and one printer, all connected through a common wire. So all are connected. So this forms the network, right? और ये भी जरूरी नहीं है कि नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं. It can be any device. We can install a printer, we can install a scanner, we can install a modem, right? Various other devices can be added, right? Then we have different types of communication that are happening in a network. इसमें simplex method है, half duplex और full duplex है. Simplex means one direction, right? जैसे ये जो diagram आपको ऊपर दिखा रही थी, simplex method, one direction. The message travels
simplex, right? So information can be transferred only in one direction. That is simplex mode of communication, right? और ये कैसे होता है? ये it happens with the help of cables or satellite or wireless form of it. Fiber optic cables are used, or some other kind of cables are used, and satellite can be for this purpose, right? Second category is half duplex mode. It is bidirectional, right? So communication, it takes place between two nodes. In one bidirectional means the data can be transmitted from both the parties. The sender can send a message and it can also receive a message, right? So that is half duplex. Why it is called as half duplex? Half इसलिए बोलते हैं क्योंकि at one time only one node can transmit the data. Multiple transmission. What is a node? I'll just let you. At one time only one node can transmit the data. What is this node? Node is the device which is connected. Either it is a computer or a printer or a scanner which is connected to the network. नोड का मतलब कोई भी डिवाइस एक नेटवर्क पे जो लगा रखा है उसको नोड बोलते हैं, राइट? तो हाफ डुप्लेक्स में बायडायरेक्शनल तो है, communication happens on both the directions, sender to receiver or receiver to sender, but at one time if a sender is sending something, at that time a receiver cannot send it back. तो वो लाइन जो है आपकी बिजी रहेगी. At one time only one thing can be sent, right? So that is half duplex. But if you talk about full duplex mode, third category, उसमें both communication parties, they can send and receive a message at any time, at the same time, right? तो मतलब एक ही टाइम पे दोनों जो सेंडर रिसीवर हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं एक ही टाइम पे. दैट इज फुल डुप्लेक्स, राइट? तो ये तीन कैटेगरीज हैं कम्युनिकेशन की: सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स, राइट? Now, if I want my computer to use this full duplex mode, then I need to install one device called as network interface card on my system. Although for all small networks we need it, right? अगर आपको wired network चाहिए या wireless network चाहिए, आपको अपना system जो है किसी network में connect करना है, you have to install this card called as NIC, a network interface card. So in short, we also call it as a LAN card, local area network card, right? This you need to install in this computer or laptop, whatever you have. Generally in computers में ये पहले से लगा होता है, right? If you need a stronger one, you can add up external card also. अलग से device आता है उसको आप computer के साथ connect कर सकते हो, right? We need this card for communication because this is the point where we connect that cable which is coming from the network. right? जो network में cable आ रही है या अगर वायरलेस है तो वहां पे आपका एंटीना NIC कार्ड पे लगाओ, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन होगा. और अगर वायर्ड है तो आपकी केबल आके इस NIC कार्ड के अंदर प्लग इन होगी, ठीक है. दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन. So it is very important. Now next important thing is, why do we need these kind of networks? क्या जरूरत है हमें नेटवर्क्स बनाने? What are the importance? What are the advantages? First and foremost, resource sharing can be done, right? Resource sharing means, now if, let's say for example, if we talk about that I want to install a printer in a lab, but I want every computer to access that printer, right? Now it can only be, it is only possible if we have a network inside that lab. अगर नेटवर्क नहीं है तो मुझे हर कंप्यूटर के साथ एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, एक प्रिंटर लगाना पड़ेगा. यू कैन नॉट शेयर इट. तो शेयरिंग तभी पॉसिबल है जब नेटवर्किंग है. So when network is there, all computers, they can access one common printer which is lying in the network, and they can give command or they can print the things directly. Right? There's no need for access. You just choose that, connect that printer from the network, and then you just give a print command. आपका printer वहाँ पे चल जाएगा, right? So resources we can share. Not only printer, other peripheral devices also we can share. We can share scanners. We can share
modems also. One internet connection can be given to all the devices in the network. Okay, जैसे बेस्ट एग्जांपल हम घर में देखो, घर पे वाईफाई लगा लेते हैं, वो वाईफाई घर पे हर कोई मोबाइल पे यूज कर सकता है, उस पे भी एक्सेसिबल है। That is also one small network, right? So we are sharing one resources to all multiple devices. The same thing we can do it in a network. So that's one very good, very big advantage of it, right? Then second part is we can communicate. One device can send a message to another device. Right? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेजेस डाल सकते हैं, हम फाइल शेयर कर सकते हैं, राइट, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, मुझे एक सिस्टम पे बैठ के दूसरे सिस्टम की फाइल्स ओपन करनी है, आई कैन डू दैट, राइट, थोड़ी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं बट वी कैन डू दैट, फाइन। एंड व्हेनेवर अ नेटवर्क इज फॉर्म, जब नेटवर्क हम बनाते हैं तो लॉट ऑफ डिवाइसेस ऐड आते हैं, राइट, एंड ऑल दीज डिवाइसेस दे हैव डिफरेंट रोल्स. We'll learn all these devices later part of the chapter, right? So that's again very important advantage. Communication is very good advantage of network. Next we have transmission medium. ये मैं काफी चीजें आपको बता चुका हूँ, हमारे पास दो तरह के ट्रांसमिशन मीडियम है. ट्रांसमिशन मीडियम इज व्हाट टाइप ऑफ चैनल दैट यू विल फॉलो फॉर ट्रांसमिशन. कौन सा चैनल यूज करोगे ट्रांसमिशन के लिए? वी हैव टू कैटेगरीज, वन इज वायर्ड, वन इज वायरलेस, राइट. वायर्ड मीन्स, और वायर्ड को हम गाइडेड भी बोलते हैं, वायरलेस को अनगाइडेड बोलते हैं, राइट. गाइडेड मतलब जिसमें फिजिकली कोई केबल लगाई है तो वो गाइडेड है या वायर्ड मीडियम है, और अनगाइडेड जहाँ पे फिजिकल केबल नहीं है, हम किसी वायरलेस फॉर्म से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो रेडियो वेव यूज कर रहे हैं, इंफ्रारेड यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं. ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अनगाइडेड. और गाइडेड में भी जो केबल्स यूज होती हैं, केबल्स की अलग अलग कैटेगरी, राइट. देयर आर ट्विस्टेड पेयर केबल्स, देयर आर कोएक्सियल केबल्स, एंड देयर आर फाइबर ऑप्टिक केबल्स. ठीक है, ये है कैटेगरीज. So see, these are the categories. Communication medium comes into two categories: guided or wired, and unguided or wireless. Guided में तीन कैटेगरी है: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक. Unguided में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, right? Now I'll just give you a brief introduction of all these categories and what are the types, what is the difference between these cables, what are the difference between these waves. जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, that is the most commonly used, right? ट्विस्टेड पेयर में अगर आप कंपेयर करो तो जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की केबल होती है, इसमें दो केबल होती है, ठीक है, वैसे ही ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैज टू केबल्स. बेसिकली दे आर सेट ऑफ टू केबल्स. बेसिकली उसमें दो नहीं होती, उसमें 6 होती हैं, 8 होती है, ठीक है. तो 6 8 का मतलब वही है कि दो दो के पेयर होते हैं, राइट. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट चीपेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ केबल्स, और सबसे ज़्यादा यूज होती हैं ये, ठीक है. हमारी लैब्स वगैरह में सब जगह पे यही है. जो हम कैमराज इंस्टॉल करते हैं घरों में, कैमराज वगैरह में these cables are also used there, right? Second is coaxial cable. Coaxial की example best is your केबल टीवी वाला केबल. आपने देखा होगा जो घर में केबल टीवी लोग यूज करते हैं, केबल का जो केबल है थोड़ा मोटा होता है, स्टिफी, उसको मोड़ना थोड़ा मुश्किल है. उसमें यू सी देयर इज वन कॉपर केबल इन द सेंटर, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग होगी, उसके ऊपर एक मैश सा होगा जाली सी, वो सिल्वर कलर की होगी. उसमें अगेन दैट इज अ वायरलेस केबल. तो इसमें जो सेंटर मोस्ट केबल है, दैट केबल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, राइट. इसमें दो केबल्स की सिंगल केबल होती है. And coaxial are stronger than twisted pair and they are expensive also. Optical fiber is the most advanced one. आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत यूज होती है. तो अगर आप घर पे वाईफाई वगैरह लगा रहे हो तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होती है वाईफाई में आजकल जनरली. तो दिस केबल बेसिकली
doesn't carry any copper wire. इसमें ग्लास फाइबर्स से बनी हुई छोटी छोटी वायर्स होती हैं, पतली पतली, they are used, right? And the data is transmitted in the form of light wave. बाकी दोनों पे आपको डेटा जो है वो किसी एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. फाइबर ऑप्टिक केबल में ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लेजर लाइट, राइट? बिकॉज ग्लास फाइबर से ट्रांसमिट. फॉर्म में ट्रांसफर होता है. हेलो सर प्लीज रिपीट करना, डाटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है. सी, तीन कैटेगरीज हैं केबल्स की. ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर द कॉमन वन. इसमें दो केबल्स का पेयर होता है, कॉपर की केबल्स होती हैं. कोएक्सियल केबल्स होती हैं जिसमें वी हैव वन कॉपर केबल इन द सेंटर और उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग्स हैं और उसके ऊपर एक मैश होती है जिससे प्रोटेक्शन दी जाती है, राइट? कोएक्सियल केबल्स आर स्ट्रॉन्गर देन ट्विस्टेड केबल्स, राइट? कोएक्सियल केबल की एग्जांपल आपकी केबल टीवी वाली जो वायर है, कभी देखना वो थोड़ी थिक होगी, उसको मोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको बेंड करना मुश्किल होता है. ट्विस्टेड केबल्स जो है सबसे कॉमन है घर पे, अगर आपने कैमरास वगैरह लगवाए हैं या स्कूल्स में देखे होंगे तो कैमरास में जो केबल यूज करते हैं दैट इज ट्विस्टेड पेयर. जो लैब में हम लोग यूज करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर है. और फाइबर ऑप्टिक जो है सबसे एडवांस्ड है, सबसे फास्ट है और इसमें देयर इज नो कॉपर वायर यूज. इसमें ग्लास फाइबर से बनी हुई वायर्स होती हैं, राइट? और डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, राइट? इसमें डेटा ट्रांसमिशन आपका किसी और एनालॉग फॉर्म में नहीं होता, इसमें लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, राइट? तो ऑप्टिकल फाइबर्स दे आर again they are very strong, right? And they are most expensive also. Okay, so these are the three categories of wired kind of communication. When we talk about unguided or wireless communication, उसमें तीन चार नाम है यहाँ पे, तीन लिखे हैं. रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है और इंफ्रारेड वेव्स है. इंफ्रारेड की एग्जांपल आपका टीवी का रिमोट, राइट? व्हेन यू स्विच ऑन द टीवी विद द हेल्प ऑफ अ रिमोट, वो जो ट्रांसमिशन हो रही है वो इंफ्रारेड केबल्स, इंफ्रारेड वायर से हो रही है, इंफ्रारेड वेव से हो रही है, राइट? इंफ्रारेड वेव्स की प्रॉब्लम क्या है कि दे कैन नॉट पेनिट्रेट टू द वॉल्स और द ऑब्स्ट्रक्शन. आप दीवार के दूसरी तरफ मैसेज या वो मैसेज नहीं फॉरवर्ड कर सकते हो. बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आया तो आपका जो भी वेव जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है. ठीक है, आपने देखा होगा टीवी अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चलाएं दीवार की तरफ करके तभी हमारा टीवी ऑन हो जाएगा. वो क्यों? क्योंकि हमारी वेव जो है वो दीवार से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस जा रही है, तो दीवार को पेनिट्रेट नहीं कर सकती. दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड एंड इट कैनॉट कवर द लॉन्गर डिस्टेंसेस, राइट? देन रेडियो वेव्स, ये आपका एफएम रेडियो वाला सिस्टम है. रेडियो वेव्स दे आर बेसिकली the waves are transmitted, they are broadcasted in all directions. ठीक है, इंफ्रारेड जो है वो एक ही डायरेक्शन फॉलो करती है, रेडियो वेव्स जो है वो हर डायरेक्शन में भेजी जाती है. जैसे आपके एफएम के सिग्नल्स आते हैं ना, आप कहीं पे भी कार चलाते हुए भी सुन सकते हो, चलते फिरते भी सुन सकते हो. वो क्योंकि उनकी वेव्स जो है हर जगह ट्रांसमिट हो रही है. इट इज नॉट वन डायरेक्शनल, इट इज मल्टी डायरेक्शनल, राइट? एंड रेडियो वेव्स आर स्ट्रॉन्गर. इसको ये ऑब्स्ट्रक्शन को याद आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रांसमिट हो जाती हैं. रूम के अंदर भी मस्त वेव्स ट्रेवल कर सकती है, रूम के बाहर भी कर सकती है, राइट? एंड दे ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेस एज कंपेयर टू इंफ्रारेड. थर्ड कैटेगरी इज माइक्रोवेव. माइक्रोवेव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दीज. ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है माइक्रोवेव और ये वन डायरेक्शनल होती है, मल्टी डायरेक्शन नहीं है, राइट? और इसकी भी एक प्रॉब्लम है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, राइट? माइक्रोवेव्स दे आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग, they are so strong that they are used for transmitting data from one country to another country, but that is done through the sea area. तो आपने देखा होगा सी एरियाज में लाइट हाउस बने होते हैं, तो वो वहां से हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कर सकते हैं. जो सी एरिया है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आने के चांसेस नहीं होते, कम होते हैं. ठीक है, इवन when we transmit data to the satellite को ट्रांसमिट करना बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो ऐसे डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए वी यूज माइक्रोवेव, राइट?
तो ये 3 कैटेगरी होगी अनगाइडेड ट्रांसमिशन, राइट। देन वी हैव there are various kinds of devices which are used within a network. एक network के अंदर we use lot of devices, right? Because बहुत सारी problems हैं, बहुत सारे जैसे there are various things that we have to manage, right? जैसे एक डिवाइस आता है जी रिपीटर। रिपीटर का काम है सिग्नल्स को बूस्ट करके रीस्टोर करके अगेन इट इज सेंट, राइट। तो रिपीटर के नाम से पता लगता है रिपीट करना है। तो व्हाट हैपन इज व्हेन ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस वेदर इट इज वायर्ड और अनवायर्ड, तो जैसे ही कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसके बाद जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, ठीक है। सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होने से क्या होगा, योर डेटा कैनॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैनॉट ट्रैवल, राइट। Directly in one go, it cannot travel longer distances. Every kind of medium that we use, it has some limitation, right? जैसे जो कोएक्सियल केबल्स हैं या फिर जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, इन सब की देयर इज ए लिमिट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। जैसे ट्विस्टेड पेयर जो सबसे कॉमन है, उसकी लिमिट ये है कि वो 100 मीटर्स 200 मीटर्स या 150 मीटर्स के बाद वो वीक हो जाते हैं, इतने इससे ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते। हमें 100 मीटर्स के बाद में एक रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो वो रिपीटर क्या करेगा, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को रीस्टोर करके दोबारा से भेज सकता है, ठीक है। यू सी दिस, जैसे ये एक नेटवर्क लगाया, ये एक अनदर नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है, ये इनमें डिस्टेंस काफ़ी है, तो बीच बीच में से रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स द यूज ऑफ अ नेटवर्क रिपीटर। अनदर डिवाइस इज हब। हब और स्विच दोनों एक जैसे हैं लगभग, आपने कई जगह पे इनको देखा होगा। तो ये हब इज ए डिवाइस विच हैज सेवरल स्मॉल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, इन पोर्ट्स पे हम केबल्स को कनेक्ट करते हैं। तो मतलब अगर हमने नेटवर्क बनाना है तो उन नेटवर्क्स को हम हब से जोड़ेंगे। जितने कंप्यूटर्स होंगे उन सब में से एक एक केबल आएगा, तो केबल को इस हब के साथ हम अटैच करते हैं, राइट। So it's a connecting point, you can say. Several lines they are connected to one small device called as a hub, right? और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हब में और स्विच में, स्विच इज ऑल्सो यूज इन द सेम, स्विच और हब दोनों डिवाइस इसी तरह के हैं। दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, हब जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है। मतलब अगर मान लो एक फर्स्ट कंप्यूटर ने मैसेज भेजना है लास्ट कंप्यूटर को, तो वो जैसे ही हब के पास मैसेज पहुंचा वो मैसेज सबको भेज देगा, राइट। बट स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो सबको नहीं भेजता, वो सिर्फ उस डेडिकेटेड डिवाइस को ही मैसेज फॉरवर्ड करता है जहां जाना चाहिए, राइट। So this is important. What is the difference between hub and switch? This is very important question in for exam also. So hub will broadcast the entire message it receives to the entire devices which are connected, whereas switch transmits the data to the intended node only. Intended means the node which has to receive the data, ठीक है। ऐसे ही एक ब्रिज आता है। ब्रिज जो है वो बेसिकली बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ने में आता है, राइट। रिपीटर का काम है विद इन नेटवर्क, ब्रिज का काम है 2 3 4 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। व्हेन वी हैव मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड वी वांट टू कनेक्ट देम, वी यूज अ ब्रिज टू कनेक्ट, ठीक है। तो मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए वी यूज अ ब्रिज, राइट। And they are also intelligent devices. They transmit the data to the intended node only, not to everyone. Okay, switch मैं बता चुका हूँ, ये भी वही मल्टी पोर्ट है, बट ये सिर्फ इंटेंडेड नोड को, डेस्टिनेशन नोड को ही कनेक्ट करता है, बाकी सबको ट्रांसमिट नहीं करता, right? Then we are left with routers, gateway. I think now the time is up. So even our class is going to end up. So we'll do these rest of the devices, these parts in the next class, right? I think we are must be clear with the things. Any doubt to anybody?